सो रिसेंटली हम ना जॉब मार्केट में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। लाइक फ्यू हैव दिस माइंडसेट कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिप्लेस होने वाले हैं टोटली एआई से। किसी किसी फील्ड में इमेज जनरेशन का काम हो गया या फिर वीडियो एडिटिंग का काम हो गया, वहाँ पर भी एआई काफ़ी फास्ट काम ले रहा है लोगों का। सो यू बीइंग एन एआई इंजीनियर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? AI आपकी जॉब नहीं लेगा. It will never take that. एक person whoever is the software engineer or developer or a product manager who knows to use AI, तो वो personality may be able to take a job of a few people. एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर होता क्या है, वो क्या काम करता है? तो एआई एज अ करियर ऑप्शन कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू यू? I feel it's a phenomenal career option. व्हाट अबाउट दोस्त जिनका मैथमेटिक्स वीक है, क्या उनको एक एआई इंजीनियर की तरफ नहीं देखना चाहिए? Absolutely, mathematics is important. Statistics and probability is also important. तो एआई को लेकर के सबके अपने अपने प्रिडिक्शंस हैं। आई वुड आल्सो लाइक टू नो योर प्रिडिक्शंस कि आज से 10 साल बाद सब कुछ कैसा दिख रहा होगा। Maybe after 5 years, शायद quantum AI आ जाए. AI will start changing the way we use the internet. आगे जाके AGI people talk about. इंटरव्यूज में एक इंटरव्यूअर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है? I would definitely recommend कि आप Python से स्टार्ट करिए. तो डीएसए किस लेवल का पूछा जाता है? इन जनरल आपको लीड कोड इजी जो होता है वो तो अच्छे से आना चाहिए. लीड कोड मीडियम भी आपको अच्छे से आना चाहिए. लीड कोड हार्ड मे बी आस्क्ड डिपेंडिंग ऑन द रोल दैट यू विल डू. क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके हम लोग अपनी एआई एमएल स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं? अब किसी भी नई चीज से हमें तब तक डर लगता रहता है जब तक उसके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं होता। अब सेम चीज हो रही है एआई के साथ भी। लोग एआई को जानने की जगह, उसे समझने की जगह उससे डर रहे हैं कि यार ये हमारी जॉब ले जाएगा। आज की पॉडकास्ट में आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। हमने इनवाइट किया है एक गूगल के एआई इंजीनियर को। टुडे वी हैव गोपाला विद अस, जो हमें बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं कि भाई एआई होता क्या है, एआई इंजीनियर काम क्या करता है। अगर आपको भी करियर परस्यू करना है एज एन एआई इंजीनियर तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छा सा हमने एक रोड मैप डिस्कस किया है, रिसोर्सेज भी बताए हैं स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है, फिर सैलरीज कितनी मिलती हैं, 5 साल बाद आपकी सैलरीज कितनी हो जाएंगी, रिमोट जॉब में कितनी सैलरीज ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिसकी वजह से टेंशन में है कि क्या एक्चुअल में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है। कौन से ऐसे फील्ड हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा भी जो कि एआई से कंप्लीटली रिप्लेस होने वाले हैं, या फिर अब से 5 साल बाद 10 साल बाद फ्यूचर कैसा दिखेगा विद द हेल्प ऑफ एआई। तो पॉडकास्ट को आप लोग एंड तक देखना और एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है? इसके बाद आप लोग एआई से डरना बंद कर देंगे एंड उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर छोड़ देना प्यारा सा, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी और पॉडकास्ट मैं आपके लिए बनाता रहूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो हाय गोपाला, हाउ आर यू? Hey Fraz, I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। सो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, हमारी ऑडियंस के लिए ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। Sure. I am an AI engineer. My name is Gopala Dar. I work at Google. And it's been about 4 years that I've been in this profession. I've been doing AI engineering for a while, but इसमें Google में and इससे previous में professional work में it's been about 4 to 5 years that I've worked in this industry. Alright, Gopala. So before we get into the roadmap and how can someone become AI and ML engineer, there are few questions जो बहुत सारे students के and professionals के दिमाग में आते होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर होता क्या है, वो क्या काम करता है? That's a very good question, Fraz. So basically 2 टाइप के होते हैं roles, at least अभी used to be, अभी तो और भी आ गए हैं. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंजीनियरिंग का रोल होता है और दूसरा एमएल इंजीनियरिंग का रोल होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग का रोल होता है. एमएल इंजीनियरिंग का रोल इज लाइक अ सबसेट ऑफ एआई इंजीनियरिंग का रोल, जिसमें मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का वर्क ज़्यादा रहता है. एंड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग एआई इंजीनियरिंग, उसमें आजकल का जनरेटिव एआई का वर्क भी रहता है. सो इट्स जनरेटिव एआई भी होता है उसमें, मशीन लर्निंग भी होता है और डीप लर्निंग भी होता है. सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दीज थ्री. एंड sometimes it also involves building pipelines, like creation of ingestion pipelines and the whole data and AI pipelines. That work also comes in sometimes in the AI engineering work. सो रिसेंटली हम ना जॉब मार्केट में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। लाइक फ्यू हैव दिस माइंडसेट कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिप्लेस होने वाले हैं टोटली एआई से। कोई कोई बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिप्लेस नहीं होंगे, उनकी जो जॉब्स हैं वो बस असिस्ट होंगी थ्रू एआई। सो यू बीइंग एन एआई इंजीनियर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? I know a lot of people say, maybe around me I've heard a lot of people say this ki, AI will take their jobs. I personally believe that that is not going to happen. AI आपकी job नहीं लेगा. It will never take that because it is not very cognizant. It is not aware of its surroundings. In fact, a person who knows how to use the AI, एक
person, whoever is the software engineer or developer or a product manager who knows to use AI, जिसको पता है कि how do I use that AI a little better and a little more in a more advanced way, will be able to get more work done. तो वो person, वो personality may be able to take a job of a few people, but not the AI itself. So, what kind of jobs have you seen getting replaced by AI? Like, recently I have seen कि बहुत सारे content creation का काम AI बहुत fast कर दे रहा है. लाइक किसी किसी फील्ड में इमेज जनरेशन का काम हो गया या फिर वीडियो एडिटिंग का काम हो गया, वहाँ पर भी एआई काफ़ी फास्ट काम ले ले रहा है लोगों का. सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से फील्ड्स अभी रिप्लेस हो गए हैं? आई फील कि रिप्लेस तो नहीं हुए, बट आई हैव सीन टीम्स जहाँ पर वन और टू पीपल हु आर रियली गुड विद यूजिंग दीज AI टूल्स और बिल्डिंग दीज AI सॉल्यूशंस, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर, लेट्स से द क्रिएटिव वर्क फ्लो. एंड ऐसा नहीं है कि देर ओनली इंजीनियरिंग पीपल, देर ऑल्सो लाइक क्रिएटिव्स वर्किंग टुगेदर विद दीज इंजीनियरिंग फोक्स. सो दे हैव बिल्ट रियली रियली इम्प्रेसिव पाइपलाइंस जो मतलब इट डज द वर्क ऑफ 10 पीपल. 10 लोगों का काम वो पाइपलाइन 2 या 3 लोगों की टीम में कर सकता है. So again, like I said, human capital has to be more efficient. That will be the most important thing. मतलब जितना better हम अपने आप को बना सके to be able to use these tools and efficiently build system with these tools, that will be the most beneficial thing. ठीक है. अच्छा, जो हमारी पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी अपना करियर बनाना चाह रहे हैं. कुछ लोग ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, मे बी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टेस्टर, डेवऑप्स इंजीनियर, एंड दे वांट टू ट्रांजिशन इनटू एआई. तो एआई एज अ करियर ऑप्शन कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू यू? आई फील इट्स अ फिनोमिनल करियर ऑप्शन, क्योंकि अभी तो डिमांड बढ़ने ही वाला है AI का. एंड इट्स नॉट लाइक मैं बोल रहा हूँ ऐसा. इफ़ यू रीड ऑनलाइन एंड इफ यू सी द ट्रेंड्स, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज मोस्ट कंपनीज हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन AI. तो आने वाले टाइम में ऑफकोर्स AI इंजीनियरिंग रिलेटेड या इवन AI प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड भी वर्क काफ़ी पड़ने वाला है. सो इट्स डेफिनेटली अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी. ओके, इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ना सैलरीज भी जाननी होती हैं अलग अलग फील्ड्स की. व्हाट आर द सैलरीज एज एन एआई एंड एमएल इंजीनियर फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है? गिव मी एन एग्जांपल, इंडिया में क्या सैलरीज मिलती हैं एंड बाहर क्या सैलरीज मिलती हैं? So in my experience, a fresher who wants to start in a good AI/ML company, in my experience and what I have seen around India में बाकी सारी companies, startups and even MNCs के comparison में, 8 to 10 LPA is the starting one. I mean, I'm just giving a ballpark number. This may be a little obsolete. अभी का figure शायद change हो गए हो. ये इंडिया का है. एंड देन यूएस का जो मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे कॉलीग्स हैं who I have interacted with in the past, generally what they have observed and they always say is that around 80 to 100K is a starting expectation for people who are just getting started. And if you have more experience, then it goes up. It can go up to, in India, it can go up to like 25, 30, 35 LPA in a couple of years, like 3-4 years mein. And then with in the US and all, it can, I'm not sure about the US, but I've heard it goes up to 200K as well, for just a couple of years of experience. ऑल राइट. फ्रेशर्स को ना अक्सर ही कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ट्राई कुछ किया नहीं होता है. तो हाउ कैन समवन डिसाइड कि उसको एआई इंजीनियर बनना है? लाइक, कैन यू टेल विथ योर स्टोरी? आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आ रही होगी. अगर आपने भी मन बना लिया है कि आपको जनरेटिव एआई सीखना है, तो लेट मी टेल यू अबाउट अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स एंड जनरेटिव एआई बाय सिंपली लर्न. You will learn the latest technology and tools along with 11 projects which you can include in your resume. Now let us see what all you are going to learn in this program. This program covers 14 plus skills like SQL, data visualization with Tableau, data storytelling with Power BI, prompt engineering, generative AI, and lot more. You will also learn Python libraries like Pandas, NumPy, and Scikit-learns, and a lot of other tools which are being used in the industry. In this program, you will be creating 20 hands-on projects and 3 capstone projects. Few of the projects that you are going to cover are Visual Assistant with generative AI, online car rental platform, flight delay analysis, and visualization. The sessions are going to be live, and in case you miss a live session, you get the recording of that session. You will also have mentoring sessions for doubt clarification and project support. All the learners will be able to interact with each other
and with the mentor in real time via Slack. You will also get a dedicated cohort manager for all your queries. This program has got an average rating of 4.5 star, which is pretty good. Also, Simply Learn is reviewed and recommended by Forbes advisors. Now, what you can do is you can go to the website. I will provide the link in description. Check out the entire curriculum, download the syllabus, and also read the learners' reviews which are there on the website. Now, the question is, can anyone join this program? No, there's an eligibility criteria. You need to hold a bachelor's degree with at least 50% marks to be eligible for this program. So definitely check out this program. Many companies like Accenture, Netflix, Amazon are actively hiring for these roles. You can check out the fees of this program on the official website, the link of which I will provide in the description. Okay, so if you're interested, definitely check it out. And now let's continue with the podcast. So, in my case, it was curiosity, and I was really curious about AI and machine learning. This is like back in the day, 2070, 2080. Deep learning was there, and I kind of really wanted to know what's happening. क्या हो रहा है सब लोग कर रहे हैं I wanted to know. जैसे अभी generative AI का people say that time it used to be deep learning, neural networks and everything. So I started from there. तो अगर आपको naturally curiosity, naturally instinctively feel हो रहा है कि you are curious towards that and you want to learn, then there is nothing wrong with that. Spend your time, spend your energy. Even if you are a student right now, spare some time, or thoda आप every day or every week spend some time to learn about that, and gradually you will be able to understand what is going on. And you will also be able to determine कि आपको इसमें AI में करना है or not, if you want to build your future in that. और आपको अगर AI में करना है तो AI engineering में करना है, ML engineering में करना है, ML ops में करना है, or do you want to go for AI product management? All those things, once you start experimenting yourself, you will understand. But I would definitely recommend कि आप week में या month में जो भी आपके पास थोड़ा सा time है, get some time, read about what's happening in the world in AI. ठीक है, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन हमारे BCA BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जो कि बीटेक को अलाउ करते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज ओपन फॉर बीटेक एंड MCA, बट BCA के लिए एंड BSc के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है. तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है कि BSc BCA करने के बाद आप AI ML इंजीनियर नहीं बन सकते, यू हैव टू डू बीटेक? I don't think that is the case, because AI ML is not like 100%. It's not like a conventional software development की तरह तो नहीं होता है ये. So if you have done BSc, BCA or any other relevant course, अगर आपका fundamentals clear है, or if you want to spend time upskilling, learning about the maths, probability, statistics, fundamentals of algorithms and all those things, then definitely you can also break into AI ML, and you can also start building a career into this. It's not unheard of. I know people personally who have done non-conventional paths and they are now working in AI ML. ऐसे लोगों को मैं I know, so it's not unheard of. ओके, डू यू नो एग्जांपल ऑफ समवन जिसने अपना करियर स्विच किया हो, फॉर एग्जांपल कंप्लीटली डिफरेंट करियर हो, लॉयर या फिर डॉक्टर, एंड वो एक AI इंजीनियर बन गया हो? AI engineer तो नहीं, but I know a couple of people from the medicinal domain who were into, who are, of course, some of them were doctors. Two people I know really personally some years back, and they were so interested in AI ML. उस टाइम पे चैटबॉट होते थे, उन्होंने खुद से चालू कर दिया चैटबॉट पे बिल्ड करना. They had their own startup. So it is possible with enough conviction, और वो एक curiosity बोले हो या आप you call it एक जुनून टाइप बोल सकते हैं, वो होता है तो लोग करते हैं. So I have seen people, and that person actually built a company, and actually that's right now it's being utilized by a lot of people in UAE and in India. So it's like a multi-region company. अच्छा, that's great. So nothing is stopping you basically. ना आपकी डिग्री, ना आपका previous profession, be it from any background, you can land into this field if you have the right skills, correct? That's right. That's what I believe. ठीक है, अब स्किल्स की बात जब आती है तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है, बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे कि मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर एक AI इंजीनियर बनने के लिए. व्हाट अबाउट दोज जिनका मैथमेटिक्स वीक है, क्या उनको एक AI इंजीनियर की तरफ नहीं देखना चाहिए? That's first of all, जो what you just mentioned, आपने जो भी बोला कि mathematics important है, absolutely mathematics is important. Statistics and probability is also important. But I would say कि अगर आपका मैथ्स वीक है, it doesn't mean कि आपको नहीं देखना चाहिए एमएल की ओर. It's just means कि आप थोड़ा अगर अटेम्प्ट करो, आप थोड़ा एफर्ट डालें और उसमें यू रीड अबाउट दीज थिंग्स एंड प्रैक्टिस इट अ लिटिल मोर, यू कैन अंडरस्टैंड इट. इट मेक्स योर लाइफ ईजियर. फिर आप जब आगे जाके थोड़ा मोर एडवांस्ड एल्गोरिथम्स पे आएंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली थिंग्स.
तो आई वुड नॉट डिस्करेज कि आपको जस्ट बिकॉज अभी थोड़ा मैथ्स वीक है तो आप मत करो वो। आई वुड से कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से कुछ भी हो सकता है, तो मैथ्स स्किल इंप्रूव करना भी इतना हार्ड नहीं है। डेफिनेटली यू कैन डू इट इफ यू प्रैक्टिस एंड यू आर कंसिस्टेंट विद योर शेड्यूल। ओके, विद द एडवांसमेंट्स ऑफ एआई कुछ ऐसे नए जॉब रोल्स भी आ रहे हैं क्या जिसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है? जैसे आपने शायद अभी कन्वर्सेशन में मेंशन किया था कि यू कैन बी एन एआई प्रोडक्ट मैनेजर। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोडिंग करनी पड़ेगी। सो आर देयर एनी सच अदर अपॉर्चुनिटीज? For sure. I mean, AI product managers are, I mean, product manager in general doesn't require coding, at least what I have seen. Some roles do, some don't. Uh, but AI product manager का case में अगर आपका AI strong है and you are building AI products, then you don't need to know programming as a day-to-day, bread and butter के लिए. But if you know programming is helpful, of course, it helps build the product better and you have a more आपका connection better रहता है आपकी engineering team के साथ. But even if you don't know, it's still not end of the world. You can still build a career in it. So AI PM ka role is one example. Then there are also other roles जैसे AI prompt designer के roles होते हैं, किसी किसी कंपनी में होते हैं, but I have seen people in that role and I personally think that उसमें इतना प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. आई मे बी पार्शली रॉन्ग, बट मेरे को जितना पता है उसमें इतना प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. ओके, ओके। तो एआई को लेकर के सबके अपने अपने प्रिडिक्शंस हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में क्या होने वाला है। यू बीइंग एन एआई इंजीनियर, आपको काफ़ी एक रफ प्रिडिक्शन होगी इसकी, काफ़ी एक क्लोज प्रिडिक्शन होगी कि एक्चुअल में क्या होगा। सो आई वुड आल्सो लाइक टू नो योर प्रिडिक्शंस कि आज से 10 साल बाद सब कुछ कैसा दिख रहा होगा। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आज से 10 साल बाद तो बहुत डिफिकल्ट है बोलना. मे बी इन द नेक्स्ट 5 years वी माइट सी अ डिफरेंट लैंडस्केप ऑफ सर्च एंड मार्केटिंग इन एआई, विच इज़ द मोस्ट, एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे सबसे पहले यही होगा कि एआई विल स्टार्ट चेंजिंग द वे वी यूज़ द इंटरनेट. अभी भी कर ही रहा है, बट आगे और जाके करेगा. मार्केटिंग सर्च और चेंज हो जाएगा. आगे जाके एजीआई पीपल टॉक अबाउट कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विल बी कॉमन. वो होगा एंड देन इवेंचुअली मे बी आफ्टर 5 years शायद क्वांटम एआई आ जाए, जिसके थ्रू यू कैन ट्रेन ह्यूज साइजेस ऑफ मॉडल्स very very quickly. Again, these are, most of them are right now in theory, but I can see that people around the globe, researchers around the globe, are working really hard to make this happen. So हो सकता है अगले 5 साल में ये सब हो जाए. इंटरेस्टिंग। ठीक है गोपाला, तो आपने गूगल में काम किया है एज एन एआई इंजीनियर, सो आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी लिए होंगे। आई वुड लाइक टू नो कि इंटरव्यूज़ में एक इंटरव्यूअर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है? व्हाट ऑल थिंग्स आर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू ऑफ एआई और एमएल इंजीनियर? वेल, आई मीन, एक इंटरव्यू में एटलीस्ट फॉर एन एआई एमएल रोल बेसिक्स जो पूछे जाते हैं उसमें इंक्लूड होता है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स is important. Like definitely, as people say, mathematics का मतलब ये नहीं है कि somebody will ask you to solve an equation, but it means that आपका high level understanding of equations will be checked by the interviewer. But then उसके अलावा things like DSA are super important. I know DSA is generally for software development, but here also DSA पूछा जाता है in a lot of interviews, because engineering roles में you should know how to code. That is an expectation folks have. So वो पूछा जाता है. उसके अलावा सिस्टम डिज़ाइन, इफ़ इट्स सीनियोरिटी है रोल का तो सिस्टम डिज़ाइन भी पूछा जाता है फॉर मशीन लर्निंग सिस्टम्स. DBMS इज़ गुड टू नो. अगर आपको अच्छे से आता है तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, मैथ्स एंड स्टैट्स दे आर इंपॉर्टेंट. उसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो रहते ही है. ओके, कूल। ठीक है, अब हम लोग रोड मैप स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि मुझे कुछ नहीं आता है, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स पढ़ूंगा जा करके। वो बेसिक्स कौन से टॉपिक्स हैं एंड हाउ मच टाइम शुड आई स्पेंड ऑन दोज टॉपिक्स? लेट्स इफ वी अज्यूम कि एक स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, उसको मतलब कुछ भी नहीं पता है मशीन लर्निंग और एआई के बारे में, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन इज टू रीड अप अबाउट द मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. एकदम फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करो. इट्स ओके इवन इफ यू डोंट नो प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल भी आपको पढ़ना पड़े, अच्छे से पढ़िए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोस फंडामेंटल्स क्लियर. Like I've seen people who are like way advanced, but they also kind of forget, or they don't have clarity about what that metrics need. This is the fundamentals of statistics. Those are important. वो पढ़िए. And then start with machine learning का fundamentals as well. Here I would also like a moment to discuss कि आप कहाँ से कर सकते हो ये, right?
मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन रहता है मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स करने का. दैट इज़ बाय गूगल इटसेल्फ. इट्स अ फ्री कोर्स. If you just Google and search for machine learning crash course by Google, they have a website. It not only has a machine learning crash course, but they इनके पास और भी I think 6-7 courses है different ML topics के लिए, like recommendation systems, time series analysis and all those things. वो काफ़ी अच्छा है. It starts from the basics और वो हर एक टॉपिक को briefly explain करता है. तो each टॉपिक आप briefly समझ सकते हैं उससे. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप यू कैन रीड अबाउट देम ऑनलाइन. आप यूट्यूब पे सर्च करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं. तो मेरे हिसाब से वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन योर मशीन लर्निंग जर्नी. After you are clear with machine learning and basics of statistics, of course, then I would say ki start building projects. Start building simple projects with scikit-learn. Scikit-learn is a good library that you can learn. And then you can also venture into deep learning. तो deep learning थोड़ा ज़्यादा advanced है. उसके लिए आप PyTorch सीख सकते हैं, TensorFlow सीख सकते हैं. These are frameworks people use in the industry. And then आपका ये सब हो जाए तो आप उसके बाद if you still have time and you are still curious, again curiosity is very important, तो आप जनरेटिव एआई फ्रेमवर्क्स भी सीख सकते हैं जो मॉडर्न यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल लैंग चेन हो गया एंड एडीके इज द वन विच गूगल अनाउंस्ड दिस ईयर, which is utilized for building AI applications, especially large language model based applications में when you put it into production, तो तभी वो काफ़ी यूज़ होता है. उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ इमेज जनरेशन में. अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे को पर्सनली था, तो इमेज जनरेशन के लिए आप लर्न कर सकते हैं हगिंग फेस पाइपलाइंस एंड हाउ ऑल दोज थिंग्स वर्क. दिस इज अ लिटिल मोर नुआंस्ड. वो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक हो जाता है, बट if you are interested you should definitely go for it. But yeah, I mean these are the basics and fundamentals. Once you are आप इतना कर लेंगे उसके बाद आपको खुद ही क्लैरिटी आना चालू हो जाएगा कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए और you know what is the next thing that you want to do, because that is like your specialization. But this is the basics जो आपको करना ही चाहिए मेरे हिसाब से. ओके, ग्रेट. एंड व्हाट डू यू थिंक कितना टाइम लगेगा ये सब कुछ कवर करने में जो भी आपने बताया है? If you're starting from scratch, I think anywhere from 3 to 6 months is a very decent time. 3 to 6 month मैं बोल रहा हूँ, बट 3 to 6 month मैं बोल रहा हूँ कि आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं. अगर आपको इसमें इफ़ यू वांट टू डेवलप एन एप्लीकेशन, आपको अच्छे से पूरा डेप्थ में जाके समझना है तो 1 साल के ऊपर भी लग सकता है. बिकॉज फ्रेमवर्क जैसे मैंने बोला, पाईटॉर्च बोला या टेंसरफ्लो बोला, ये काफ़ी एक्सपांस्ड है, काफ़ी बड़े हैं. इतने छोटे नहीं है कि हम, मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो इवन the people who have made are not 100%. They also don't remember everything. So these things take time. But अगर आपको basics understand कर रहे हैं just to build and create your first application, then 3 to 6 months, maybe 9 months में आप clear कर सकते हैं काफ़ी सारे concepts. ठीक है गोपाला. सो which programming language to choose and what all frameworks to learn? I would definitely recommend कि आप Python से start करिए. Python is super useful. In the industry, it is used almost by, I mean, all the people that I've interacted with, they use Python. So Python use करिए. And frameworks में machine learning के लिए आप scikit-learn से start करिए. Deep learning के लिए you have PyTorch. It's very good. Even TensorFlow is good. And generative AI के लिए अगर आप LLM वगैरह में जा रहे हैं तो LangChain is good. Llama Index is good. And even ADK is good. You can start with one. Concept इसके सब सेम ही होते हैं, तो अगर आपको एक अच्छे से आ गया तो आप दूसरे पे वो अप्लाई कर सकते हैं. नॉमेनक्लेचर चेंज होता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है. इसके अलावा अगर आपको और एडवांस्ड करना है तो मशीन लर्निंग पाइपलाइंस वगैरह, सिस्टम डिज़ाइन में अगर आपको जाना है तो आप क्यूबफ्लो पाइपलाइंस भी सीख सकते हो, बट दैट इज़ वेरी एडवांस अगर आपको उतना इंटरेस्ट है तो. ठीक है. कैन यू ऑल्सो टेल अस फ्यू एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिससे कि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए? गुड क्वेश्चन. आई फील दैट अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है एज ऑफ टुडे, आपको उसमें जनरेटिव एआई रखना चाहिए. आई नो पीपल से दैट इट इज़ अ हाइप, कुछ लोग बोलते हैं हाइप, बट आई पर्सनली बिलीव यू शुड कीप सम पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई इन प्रोजेक्ट. अगर आप एजेंट्स के थ्रू बना सकते हो उसमें तो बना रही है, डेफिनेटली पुट इट इन दिस. इट डजंट हैव टू बी कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है. कुछ सिंपल सा आपने एक सिस्टम बना दिया जिसमें मान लो मल्टी एजेंट है एंड देन इट इज़ कॉलिंग सम सिस्टम, कॉलिंग सम एपीआईज एंड इट इज़ मेकिंग सम डिसीजन ऑन द फ्लाई. वो भी काफ़ी इंप्रेसिव होता है टू शोकेस दैट यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हाउ इट वर्क्स. बोनस पॉइंट्स, अगर आप उसमें एक एक्चुअल एमएल मॉडल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एमएल मॉडल कैन बी ऑफ एनीथिंग. इट कैन बी ऑफ चर्न प्रेडिक्शन
और इट कैन बी एन ML मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आप वो भी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑन दैट फ्लो, तो दैट शोज कि आपको ML भी पता है, आपको ML भी आता है अच्छे से, एंड आपको मॉडर्न टूल्स जैसे जनरेटिव AI के टूल्स भी आपको अच्छे से आते हैं, एजेंट बिल्डिंग भी आपको अच्छे से आती है। सो दैट इज़ अ गुड होलिस्टिक थिंग। अगेन ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट में ये सब हो, एक दो तीन प्रोजेक्ट्स में भी आप अलग अलग बना के कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स व्हेन यू बिल्ड द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, दैट वाज हेल्पफुल। जस्ट लाइक कि प्रैक्टिस डीएसए, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके हम लोग अपनी एआई एमएल स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं? So modern day mein we all use Google Colab. Even in the industry, people use Google Colab. So Google Colabs are really great if you want to, build AI kind of projects, or even if you want to train or tune some models on some custom data set. They give you GPU for free as well, limited quota. Even TPU भी आपको मिल जाएगा free में, limited quota में. तो आप अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो दैट विल रियली हेल्प यू गिव एन एज। लाइक आप अगर एक ऑलरेडी बिल्ट मॉडल दिखाते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, बट अगर आप खुद से मॉडल ट्यून कर रहे हैं एंड यू आर यूजिंग योर ओन डेटा, यू आर गेटिंग डेटा फ्रॉम समवेयर, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड गूगल कोलैब। ओके, कूल। सो आपने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड इट इज आस्क्ड इन इंटरव्यूज। तो डीएसए किस लेवल का पूछा जाता है? लाइक सेगमेंट ट्री, फैनविक ट्री टाइप के कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर बेसिक एरे स्ट्रिंग्स वगैरह पूछा जाता है? आई वुड से बहुत ही हार्ड तो जनरली नहीं पूछा जाता है। लाइक इफ इट्स लाइक टू कॉम्प्लिकेटेड, जनरली तो नहीं पूछा जाता है, बट अगेन अगर आपके रोल में इंजीनियरिंग ज़्यादा है तो शायद पूछा जाए। आपके लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से लेवल पे इंटरव्यू कर रहे हो, फ्रेशर के लिए कर रहे हो, मिड के लिए कर रहे हो, सीनियर के लिए कर रहे हो। इन जनरल आपको लीड कोड ईजी जो होता है वो तो अच्छे से आना चाहिए, लीड कोड मीडियम भी आपको अच्छे से आना चाहिए। लीड कोड हार्ड जनरली नहीं पूछा जाता है, बट अगेन इट मे बी आस्क्ड डिपेंडिंग ऑन द रोल दैट यू आर इंटरव्यूइंग फॉर। ठीक है, ठीक है। हाउ कैन समवन गेट हिज और हर फर्स्ट इंटर्नशिप एज एन एआई और एमएल इंजीनियर? इन माई ओपिनियन इट इज़ ऑलवेज प्रोजेक्ट्स। आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, पुट इट आउट ऑन लिंक्डइन, and make sure you kind of get a lot of interaction, interact with a lot of people on LinkedIn, share it as much as you can, uh, and that really helps build, because आज की डेट में ऐसा है कि जनरेटिव AI इज़ न्यू फॉर एवरीवन। अगर आप कुछ नया अच्छा बना रहे हैं तो बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ जाएगा, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी कन्वेंशनल AI ML ऑफ कोर्स ये करेंगे आप तो आप लाइमलाइट में तो आ जाओगे, बट आफ्टर वंस यू गेट एन इंटरव्यू में तो आपसे कन्वेंशनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू नो द कंसेप्ट्स वेरी वेरी क्लियरली, बिकॉज दैट इज व्हाट हेल्प्स यू क्लियर योर इंटरव्यूज। बाकी प्रोजेक्ट्स इज ऑफ कोर्स इट्स सुप्रीम। अगर आप अच्छे से एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है। आई हैव सीन दिस पर्सनली फ्रॉम अ लॉट ऑफ जूनियर्स इन माई कॉलेज एज वेल। ऑलराइट, डू यू नो अ फ्यू कंपनीज इन इंडिया, बैंगलोर में या फिर हैदराबाद में, जो फ्रीक्वेंटली एआई एमएल इंजीनियर्स हायर करती रहती है, या फिर इन जनरल सारी कंपनीज हायर करने लग गई हैं आजकल? सी आई वुड से दैट इन जनरल आज की डेट में तो सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने कोई AI ML रोल तो हायर करना चालू कर दिया, चाहे वो AI प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो या इंजीनियरिंग हो। कन्वेंशनल कंपनीज थी जैसे सम सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक क्वांटिफाई एनालिटिक्स इज वन विच इज स्टार्टअप। देन तेरा टाइगर एनालिटिक्स है, हो गया आपका फ्रैक्टल हो गया। दीज पीपल यूज टू हायर ML रोल्स बैक इन द डे। तो अभी भी वो लोग AI ML रोल मेरे ख्याल में आई थिंक दे स्टिल हायर फॉर दैट रोल। But most of these companies, like most companies, even if they're media companies, even if they're healthcare companies, I have seen on LinkedIn they are also posting we need a AI engineer or a prompt engineer or a AI designer, और अलग अलग नाम होते हैं रोल्स के। बेस आजकल मतलब एवरीवन इज क्रिएटिव विद द नेम्स ऑफ द रोल्स, सो दे हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ द रोल्स, बट एक्सपेक्टेशन वही होती है। इफ़ यू ओपन द JD तो जॉब डिस्क्रिप्शन में वही एक्सपेक्टेशंस रहती है। ओके, कूल। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई डाउट है, तो आप लोग या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, वी कैन आइदर आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन, और हम लोग कभी और मिलके दोबारा से पॉडकास्ट कर लेंगे वो क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। बाकी गोपाला, लास्ट में जाते जाते, इज देयर एनी एडवाइस फॉर हूसोएवर ट्राइंग टू परस्यू फॉर दिस रोल, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फ्रेशर हो? Of course, there is one advice that I give myself every day, and I would like to give to everyone who's watching this podcast as well, is that AI के डोमेन में इट्स a very new domain, हर दिन कुछ नया होता है। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी अप टू डेट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अगर आपने कुछ आज सीख लिया तो कल वो पूरा का पूरा ऑब्सोलीट भी हो सकता है, एंड दैट इज द फैक्ट। सो इट इज़ नॉट, आई वुड से दैट इज हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
core principles भी AI के एटलीस्ट जनरेटिव AI की वजह से every day we keep changing on how do we want to build things, on how do we want to target things, approach things. So एक open और एक learning mindset बहुत important है if you want a very fulfilling career in AI. I would recommend कि आप अगर AI में जाना चाहते हैं तो आप एक open mindset रखें कि every day you might have to learn something new, every month something new might come up. And you should be okay with that. And if you are more than okay, if you are happy with that, then this is the perfect career for you. Great, great. Thanks a lot, Gopala, for being here and sharing all this information with us. And thanks a lot to you guys for watching the podcast till the end. If you're new to the channel, subscribe. If you like the video, give it a thumbs up. And let's meet in another video. Tab tak ke liye, bye bye and take care.